दिस वॉज एक्चुअली माई फर्स्ट प्रॉपर म्यूजिक वीडियो एंड हल्का सा प्रेशर होता है, एक हल्की सी नर्वसनेस ज़्यादा रहती है, बट आई थिंक एट द सेम टाइम इट्स फन बिकॉज आई गेट टू इंटरेक्ट विद पीपल. जो भी अभी तक मैंने वेब सीरीज़ किए हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैं उसमें भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ऐसा ना करूँ एसोसिएटेड विद देम, डूइंग एन इवेंट विद देम, डूइंग अ लाइव पॉडकास्ट विद देम. This is the first time and I'm actually very, very happy about it. You know, sending out the correct information is very important. Doing your own research is very important and not spreading misinformation. So good to see you, Ahsaas. Finally, you are here as a main guest for a live podcast. First of all, what do you want to say about क्या आपने preparation की, क्या बोलना है, क्या नहीं कुछ? जब ऐसा लाइव पॉडकास्ट होता है या कोई भी पैनल डिस्कशन होता है या कोई भी इंटरव्यू होता है, मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर होके नहीं आती हूँ बिकॉज आई फील लाइक आई गेट मोर नर्वस एंड आई गेट मोर कॉन्शियस अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू से. एंड आई ऑल्सो ट्राई टू मेक श्योर दैट आई डोंट नो what's being asked to me so that my answers are as authentic and as spontaneous as possible. तो मैं कोई प्रेपरेशन करके नहीं आई हूँ. आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर. इट्स जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. आई एम वेरी एक्साइटेड. आपसे ये डिफरेंस जानना चाहेंगे क्योंकि मोस्टली यूजली जब आपका इंटरव्यूज होते होंगे 3 कैम सेटअप 4 कैम सेटअप एक कमरे में होते हैं, बट ये लाइव पॉडकास्ट काफ़ी ऑडियंस सामने. हाँ, तो वो चीज़ में क्या डिफरेंस आपको? बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि यू नो यूजुअली जब ऐसा इंटरव्यूज़ होता है वेयर इट्स बीइंग रिकॉर्डेड, देयर इज़ a scope of editing and there's a scope of like अगर मैंने कुछ गलत कह दिया या कुछ I say something that I don't mean. Thank you so much. तो वो सब एडिट हो सकता है, बट लाइक इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट वी आर सेइंग एंड देयर सो मेनी पीपल एंड दे आर हियर टू हियर मी आउट. तो वो एक हल्का सा प्रेशर होता है, एक हल्की सी नर्वसनेस ज़्यादा रहती है, बट आई थिंक एट द सेम टाइम इट्स फन बिकॉज आई गेट टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड आई गेट टू लाइक देयर आर सो मेनी पीपल एंड आई लव व्हेन देयर आर लाइक दीज क्वेश्चन Q&As जहाँ पे मुझे ऑडियंस से पूछा जाता है क्वेश्चंस. तो वो मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और मैं आई एम ऑलवेज caught off guard, so it's always nice to answer those kind of questions. So ma'am, since you are a youth influencer as well, and when you meet the other influencers, there are many influencers who follow you on Instagram, and you are their idol. So how is that feeling when an influencer meet an influencer on? It is always nice that there are so many upcoming influencers, creators, actors, younger people who follow me and who sort of look up to me, and whenever I get a chance to meet them and whenever they tell me that you know they follow me and they are a little bit inspired and I sort of influence their content or their decisions in life, it definitely puts a sort of a responsibility on me. Like I have to be alert of what I'm doing and what I'm presenting on social media and also the projects that I'm doing. जो भी अभी तक मैंने वेब सीरीज़ किए हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैं उसमें भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ऐसा ना करूँ जो गलत इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि वी हैव यंगर पीपल, दे आर लुकिंग अप टू अस एंड तो वो एक तो रहता ही है. सॉरी. What is your point? What is your view to women empowerment? Oh, I'm always up for women empowerment. I feel like we should stop comparing women. We let everybody be who they are. And if we compete, if we put two women against each other and we compare, I think वहाँ पे वो पूरा women empowerment थोड़ा सा वीक हो जाता है क्योंकि वी आर जस्ट कंपेयरिंग टू इंडिविजुअल्स. वी नीड टू सपोर्ट देम नो मैटर व्हाट दे डू. वी नीड टू सपोर्ट देम इन एवरीथिंग दैट वी डू. एंड अदर देन दैट, I feel like we are all growing. I mean, we are very much in a better space than we were like probably 10 years ago. There are more films being made about with women protagonists, about issues about women. I think we are getting there. We still have a lot to do, but I'm very happy with the things, the way things are moving, and the films that are being made, the series that are being made, the conversations that are happening, and I'm all up for it. So one last thing. What is your definition? I can say what is your definition for a social media influencer? आपके हिसाब से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? एंड सेकंड थिंग, बीइंग एसोसिएटेड टू पॉप डैडी स्टूडियो, व्हाट इज दैट फीलिंग ऑल अबाउट? Firstly, I'm actually very, very happy and excited to be here and do this live podcast and be associated with Pop Diaries. I have been associated with them on a very let's say interview level when I'm promoting my shows, but here being associated with them, doing an event with them, doing a live podcast with them, this is the first time and I'm actually very, very happy about it. Answering your first question, for me a social media influencer
is just exactly how the name is, the way it sounds. We need to influence people to do better. We need to help people. I feel for me, so an influencer needs to give more information on social media on the level where they can, because they have the kind of following. So for example, like if it can be as basic about talking about a product, or talking about a designer, or talking about fitness or health. They, sending out the correct information is very important. Doing your own research is very important, and not spreading misinformation, I think is just like, because we have so much responsibility. Every influencer comes with a lot of responsibility on social media, because they have that kind of following, and people look up to them. And when we follow influencers, we follow them for information, and if we get wrong information, I think that's where things get a little dicey. So we need to be more responsible, and yes, influence people to be better people, for positivity, for all the good things in the world, because social media comes with a lot of negativity as it is. So we as influencers need to make sure that we're just spreading more positivity and spreading good information. ऐसा लोग सिस्टर सीजन 2 से बाहर आए ही नहीं थे, तब तक आपने ओ एलिया का भी सरप्राइज लोगों को दिया। वैसे और कितने सरप्राइजेस और देखने को मिले? बहुत सारे सरप्राइज देखने को मिलेंगे। ओबेलिया तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज था, बिकॉज दिस वाज एक्चुअली माय फर्स्ट प्रॉपर म्यूजिक वीडियो, एंड देयर वाज नो बेटर स्टार्ट दैन डूइंग इट विद दर्शन रावल। उनका फॉलोइंग, उनका फैंडम देख के मैं खुद बहुत शौक हूँ, और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं. ही इज़ वेरी टैलेंटेड एंड आई हैड अ ब्लास्ट शूटिंग फॉर ओबेलिया. इट्स सच अ वंडरफुल सॉन्ग. द एल्बम इज़ डूइंग सो वेल. बट अदर देन दैट, येस, देर आर मोर सिस्टर्स के एपिसोड्स कमिंग इन एंड मिसमैच आ रहा है. सीज़न 3 में मेरी एंट्री है इस बार, तो वो बहुत जल्द आएगा. हाफ सी ए सीज़न 2 बहुत जल्दी आने वाला है. तो ये तो सरप्राइजेज है जो मैंने आपको कह दिए हैं. अब और देखते हैं. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. Just please keep supporting me the way you do. I'm actually very lucky and I'm always very grateful for all the love that I get for every project that I do. कुछ भी मेरा आता है, मुझे इतना सारा प्यार मिलता है, उसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ और थैंकफुल हूँ. और बाकी just please be good, be kind as possible. Please take care of yourself and just be positive. Thank you so much.